Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to online classes of DPS Sahiwal. I am your maths teacher Faiza Manzoor. Today is our lecture number 4 of class 5. Today we will start chapter number 4 and the name of the chapter number 4 is decimals and percentages. Content we will discuss today are dividing a decimal by a whole number, exercise 4B, question number 5, part A, B and H. At the end of this lecture, students will be able to learn how to divide a decimal by a whole number. Students, you have already learned decimals, addition and subtraction of decimals, multiplication of decimals. So today we will discuss dividing a decimal by a whole number. How to divide a decimal by a whole number. But you must know whole numbers. So 0, 1, 2, 3 and so on are called whole numbers. Numbers 0, 1, 2, 3 and so on are called whole numbers. ये हमारे पास whole numbers होते हैं. Now let's start the lesson. To understand the division of decimal by a whole number, we start it by an example. 13.6. Here we have a decimal 13.6 and we divide our decimal by a whole number and the whole number is 4. We are going to divide 13.6 by the whole number 4. So here our dividend is 13.6, a decimal, and divisor is 4, a whole number. We will start as a normal division, but we need to take care of the decimal point. So we put the decimal point in the quotient just above the decimal point in the dividend. I will show you how to do this. First we check highest decimal place. Here in 13.6, 1 is at the highest decimal place, but we can't divide 1 by 4. So we divide 13 by 4, and 4 into 3 equals 12. So we write our 3 in quotient above the 3 of dividend. 4 into 3 equals 12. After subtracting 12 from 13, we get remainder 1. So students, हमने क्या किया? हमने नॉर्मल डिवीजन से स्टार्ट लिया. डेसिमल 13.6 में हमने हाईएस्ट प्लेस को सबसे पहले कंपेयर किया. At the highest place we have the number 1, but we can't divide 1 by 4, so we divide 13 by 4, and 4 into 3 equals 12 and we get the remainder 1. अभी तक हमने जस्ट नॉर्मल डिवीजन जैसे करते हैं उस तरह से हमने इसको डिवाइड किया है, तो हमारे पास रिमाइंडर 1 आ गया है. नाउ बिफोर ब्रिंगिंग डाउन द नेक्स्ट डिजिट, अब
हमने अपनी डिवीजन को कंप्लीट करने के लिए नेक्स्ट डिजिट नीचे उतारेंगे, मगर बिफोर ब्रिंगिंग डाउन दी digit after the decimal point, put a decimal point in the quotient. नेक्स्ट डिजिट को नीचे उतारने से पहले हम देख रहे हैं 6 से पहले हमारे पास डेसिमल पॉइंट आ रहा है, तो हम अपने डेसिमल पॉइंट को क्वोशंट में लिख देंगे, डेसिमल पॉइंट को अपने क्वोशंट में ले जाएंगे. सो बिफोर ब्रिंगिंग डाउन द डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, put a decimal point in the quotient and then bring down the next number 6. Now 4 into 4 equals 16 and we get remainder 0. Hence 13.6 divided by 4 equals 3.4. Exercise 4B, question number 5, part B and H. Now student, let's try another example. 14.56 divided by 7. Here we have the decimal 14.56 as a dividend and 7 a whole number as a divisor. So 14.56 is our dividend and 7 is our divisor. 7 into 2 equals 14. After subtracting 14 by 14 we get 0. Now before bringing down the next digit after the decimal point, we put decimal point in the quotient and then bring down the next digit 5. Now 5 is less than 7, so 7 into 0 equals 0. After subtracting 0 from 5 we get 5. Again bring down the next digit 6 and 7 into 8 equals 56 and we get remainder 0. Now 42.07 divided by 7. 42.07 divided by 7. 7 into 6 equals 42. So we put 6 in the quotient above the 2 of the dividend. After subtracting 42 from 42 we get 0. Next, before bringing down the digit after the decimal point, we put our decimal in the quotient and then bring down the next digit 0. 7 into 0 equals 0. After subtracting 0 from 0 we get 0. Now bring down the number 7. 7 into 1 equals 7. Subtracting 7 from 7 we get the remainder 0. So 42.07 divided by 7, then our quotient is 6.01. Now students, remember, when we divide a decimal by a whole number, the quotient may have the same number of decimal places as the dividend. For example, 14.56 divided by 7 equals 2.08. स्टूडेंट्स, अभी हमने ये एग्जाम्पल सॉल्व की है. 14.56 को जब हमने 7 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्वोशंट आया 2.08. डिविडेंड हमारे पास 14.56 है और डिविडेंड में 2 डेसिमल प्लेसेस कितने हैं? 2. तो हमारे क्वोशंट 2.08 में भी डेसिमल प्लेसेस 2 हैं. सिमिलरली नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हमने की है 42.07
यहाँ भी हमारे पास डिविडेंड में 2 डेसिमल प्लेसेस हैं और क्वोशंट हमारे आंसर में भी 2 डेसिमल प्लेसेस आ रही हैं. सो व्हेन वी डिवाइड अ डेसिमल बाय अ होल नंबर, द क्वोशंट may have the same number of decimal places as the dividend. जितनी डेसिमल प्लेसेस हमारे पास डिविडेंड में होती हैं, हमारे क्वोशंट मतलब हमारे आंसर में भी उतनी ही डेसिमल प्लेसेस होती हैं पॉइंट के बाद. नाउ स्टूडेंट्स, डिवाइडिंग अ डेसिमल बाय अ होल नंबर, जब हमने अपने डेसिमल को होल नंबर के साथ डिवाइड किया तो हमने किन स्टेप्स को फॉलो किया. वी विल स्टार्ट एज अ नॉर्मल डिवीजन, बट वी नीड टेक केयर ऑफ डेसिमल पॉइंट. हमने नॉर्मल डिवीजन से स्टार्ट किया लेकिन हमने डेसिमल पॉइंट का ख्याल रखना है. जैसे हमारे पास डेसिमल पॉइंट आएगा, बिफोर ब्रिंगिंग डाउन द डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट के बाद जो हमारे पास डिजिट होते हैं उनको नीचे यूज करने से पहले पुट अ डेसिमल पॉइंट इन द क्वोशंट. हम अपने डेसिमल पॉइंट को क्वोशंट में जरूर पुट करेंगे. नेक्स्ट, व्हेन वी डिवाइड अ डेसिमल फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर, जब हमने अपने डेसिमल फ्रैक्शन को होल नंबर के साथ डिवाइड किया, हमें क्या पता चला, द क्वोशंट में हैव सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज द डिविडेंड. जो हमारा क्वोशंट हमारा आंसर आता है उसमें हमारे पास नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस सेम होते हैं एज आवर डिविडेंड हैव. फॉर एग्जाम्पल 13.6 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स 3.4. सो डिविडेंड में अभी हमारे पास 1 डेसिमल प्लेस है 6, तो हमारा जो क्वोशंट हमारा आंसर आया है 3.4 उसमें भी पॉइंट के बाद 1 डेसिमल प्लेस होती है. नेक्स्ट 5.2 डिवाइडेड बाय 4 और हमारे पास आंसर आता है 1.3, तो आप देख सकते हैं डिविडेंड में भी 1 डेसिमल प्लेस है और हमारे आंसर में भी 1 डेसिमल प्लेस होती है. नाउ स्टूडेंट, टाइम फॉर होमवर्क. एक्सरसाइज 4B क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट C, D, E और F आप प्रैक्टिस में नोटबुक्स पर सॉल्व करेंगे. थैंक यू.